Hi, I'm Chef Ananya Banerjee and today I'm making an international favorite. Where does barbecue sauce come from? A little trivia. You think it's from the US? No. It comes from a Dominican missionary who discovered this in West Indies. Fascinating story. Anyway, he got that to Europe and other countries and barbecue sauce became popular. So let's do a pan-fried grilled chicken with barbecue sauce. For the pan-grilled chicken, take a chicken breast and you have to marinate this. Some turmeric powder, some red chilli powder, a little bit of black pepper powder, some ginger and garlic paste, salt to taste. और इसको कर देते हैं मैरिनेट. आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3-4 घंटा भी रख सकते हैं, बट मिनिमम कीप इट फॉर हाफ एन आवर. चिकन हो गया है कोट. अभी इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ और बना लेंगे बारबेक्यू सॉस. सो होममेड बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये सॉस बनाने के बाद आप बाहर का सॉस नहीं लोगे. सम ब्राउन शुगर, सम टोमेटो केचप, सम ब्लैक पेपर पाउडर, salt to taste, some Worcestershire sauce, some mustard, plain vinegar, some chili powder, and another secret ingredient, some Sriracha. Different people put different things. This is my recipe. You guys must be wondering, where did I get this cool blue gas stove from and where did I buy this cute pan from? Everything is available on Amazon. If you want to buy, the link is given in description below. Check it out. This barbecue sauce will of course go very well with the pan grilled chicken I'm making, but you can use the same recipe for a different number of dishes. The sauce is now ready. I'll grill the chicken now. As you can see, I'm heating a cast iron grill pan. It's smoking hot and that will transform my chicken to something else. Yum. अभी एक सीक्रेट बताऊँ आपको. अभी कभी भी आप ग्रिल कर रहे हो, आउटडोर ग्रिल और इंडोर ग्रिल, पैन में ऑयल डालो, पर जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हो उसमें भी ऑयल डालो. दैट मीन्स माई चिकन हैज़ टू बी वेल ऑयल्ड. उसमें क्या होगा, चिपकने का डर नहीं रहेगा. So smear it with some oil. Place this baby onto the pan. Heard that? I love that sizzle. और शुरू में बिल्कुल इसको टर्न करने का कोशिश मत करना, क्योंकि let it cook. Then it will leave the sides. Now the moment of truth. Look at that. Oh my God. This should be cooked at least for 2 to 3 minutes each sides till it's completely done. और आपने देखा है मैं पैन में बिल्कुल तेल नहीं डाला था. The oil I have put on the chicken. Let me take this baby out and put it in a platter. The pan grilled chicken is ready. The barbecue sauce is done. आप ये बारबेक्यू सॉस को डायरेक्टली चिकन के ऊपर भी पोर कर सकते हैं, बट आई एम गिविंग यू सेपरेटली सो दैट यू कैन पोर एज मच एज यू वांट. साइड में थोड़ा सैलड्स रख दिए, सम बेबी स्पिनच, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेट्यूस, cherry tomatoes, some micro greens also. They are very good for you. So just look at that. Do I say anything more? Pan grilled chicken with homemade barbecue sauce. My dinner is sorted. Your dinner can be sorted too. Just make this at home and let me know how it was.